Okay, so good afternoon everyone, right? So we will start with the basic revision of AC, है ना? So जल्दी हम लोग थोड़ा बहुत basic concepts discuss करेंगे. Then we will discuss the main concepts, right? Now, when you talk about AC, alternating current, right? We know. Tell me what we know. बताओ, everyone, right? Let us try to have a mind map, right? Try to see what are the concepts. What are the concepts that we need to focus on? The first is, tell me, I guess all of you know what is the meaning of AC and all those things, right? So Yes. first we should have a concept of waves. ठीक है, simple. Concept of waves होना चाहिए, हाँ या ना, right? अगर wave का concept याद है, so I need not to bother about the terminologies, right? What is the average, right? Concept of average, concept of RMS, amplitude क्या होता है, frequency क्या होती है, wave equation क्या होता है, superimposition के बाद क्या बनता है, and all those things, right? है ना? So बहुत basic अगर idea है ना waves का, तो मुझे at least start करने में दिक्कत नहीं होगा, है ना? I know what is the meaning of this equation, right? I'm not saying कि पूरा wave का concept होना चाहिए, right? I'm just talking in terms of maths which is involved in this chapter. Okay. Now the first thing is you should know what's the difference between when I talk about waves, right? I mean that you should know the difference between equations, right? For example, if I'm having I is equal to I naught sine omega t plus phi or cos omega t plus phi, right? You should know what's the meaning of this. It means then, now tell me, when you talk about this, it means it is, tell me, right? Tell me what is the meaning of this? It means that the current which is varying, okay, will have a sine curve. Simple. Means if you talk about at time t is equal to 0, current will be, tell me, minimum. Okay. Now here instead of I we can have V also as a source. ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. Now second concept is current, right? Current का concept को आना चाहिए. Okay. And third is vectors, right? और obviously differentiation. ठीक है, तो अगर मुझे ये तीनों आता है, right, तो I don't think कि मुझे AC में दिक्कत होनी चाहिए. Now I will not discuss small stuff because most probably you guys know already. Okay, right? So when you talk about the concepts, again, amplitude क्या होता है, time period क्या होता है, frequency क्या होती है, right? What's the difference between AC and DC, right? ये सब हमको आता है कि नहीं आता है? Yes or no? Right? I guess ये सब आता है ना? Because when you talk about AC, there can be many type of AC, right? Waves, right? Because AC just means, tell me, AC just means varying or changing polarity, है ना? Right? Varying as well as changing polarity. They can be varying DC also, right? If polarity is same. So ये हम लोगों ने देख रखा है. Now after this, what is the next concept that we discussed? Tell me. When you talk about the next concept, right? I hope all of you remember the concept of average and RMS. Yes or no? Tell me. Average and RMS. Okay. Right? So we have a concept of average and RMS. Now, when you talk about average of any function, right? I'm having any function. F of x is any function. Okay, you have to find the average of this, average. So average of this function is integration of f of x dx, right? With respect to integration of dx, right? Now, obviously here x is your variable. But when you talk about any time varying function, right, this x will be replaced by t. So in that case, we will have what? Right, we will have this f of t. This will be f of t dt, and this is dt from 0 to t, and this is also 0 to t. Right? So this is the basic expression for average. So you can find the average of any function. अगर type of problems की बात करते हैं तो यहाँ पे तुमको क्या देगा? Instead of giving your basic equation, ना, they will give you any random equation of I. Okay, any random equation of I. So if any random equation of I is given, right, instead of just having I is equal to I naught sine omega t or I is equal to I naught cos omega t, right? You can be given like any quadratic equation or any kind of equation. You can just find the average using this. Okay. Now, when you talk about RMS, right? Root mean square.
root mean square. So basically, when you talk about RMS, f of t RMS, so this is, as the name suggests, root 0 to t, it is f square t, right? Square of this function dt. Got it? By integration of 0 to t dt. Everything is in under root. This is your RMS. If you have to find the any function, right? But you don't have to do these, okay, when the sinusoidal function is given, because for sinusoidal function, you already know, right? The value of average is what? Is taken for half cycle, because when you talk about full cycle, it becomes 0, right? So for half cycle, it is what? 2 by pi, right? 2 by pi, that is the value of average you should remember. So it doesn't matter if you have been given average velocity, sorry, average voltage or average current, right? Everything will be 2 by pi. If it is a sinusoidal function, any sinusoidal function will be 2 by pi, okay, got it, over half the cycle, or half the cycle, okay. Now, next, as I told you, RMS, RMS. So RMS, as I told you, RMS is what? Tell me. Root of square, right? Square, square of integration of square with respect to t. Okay, okay, just wait a minute, I'm admitting people. Okay, right. So here I can say for current, integration of I squared dt divided by integration of dt, right? So for sinusoidal function, the integration, right, or the RMS value will be 1 by root 2. For any, so I can say that if I'm having a sinusoidal function, right, sinusoidal function. So for full cycle, right, the average value will be what? 0, yes or no, right? For full cycle, right, average value will be 0. For half cycle, 2 by pi. Peak value we know, right? Okay, this for I naught sine omega t, this for this kind of function, I naught by 2, right? For this kind of function, root 2 I naught. Okay, same as what we mean by peak value, it's the magnitude. If you find the magnitude of this, right, I naught sine square omega t plus I naught cos square omega t. Sine square omega t plus cos square omega t will be 1. It will be 2 I naught square under root, so it is root I naught. Okay, this is the RMS value, and this is your angular frequency. Okay, so you just have to remember this. And average value for half cycle, this is for full cycle 0. For half cycle it is, right, for this equation 2 by pi. Okay, so when you talk about the problem based on this, will be very easy. Okay, right? बहुत ज़्यादा easy सवाल होते हैं, आराम से तुमको equation दिया रहेगा, you just have to find. For example, these kind of problems, as I told you, these kind of problems, I is equal to 2 root t, है ना? So here you cannot use direct formula for average and RMS. You have to integrate. ठीक है? Okay, right? I hope all of you understood these kind of formulas and you know how to solve these. Yes or no? Just raise your hand. Keep on raising your hands, right? Okay, right? अब जैसे ऐसा function रहे, है ना? ऐसा function रहे. It is, instead of being a problem of physics, it becomes a problem of maths, right? Where you just have to integrate. Simple equations को integrate करना है. Okay. So this is the type of problems that you can solve. Hi Anna, tell me. Right? Yes or no? Can you solve these problems? Yes. Yes sir. Okay. So जैसे एक ये example है ना? एक example देख लो बस ये, है ना? This is the best example. यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे superimpose किया गया है ना? यहाँ पे DC और AC दोनों को superimpose किया गया है. So एक question एक बार देख लो बस. Everyone just go through this. सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हैं क्लास में, डीसी और एसी कुछ है ना? Yes, you just have to find the. हाँ सर हो गया. ठीक है, चलो, awesome. So I guess all of you already know these, है ना? So it is better to remember, right, for some specific kind of functions, right? If you remember the average value and RMS value, it will be much easier in the exam, है ना? Right? So sinusoidal we have seen half wave ka, right? Full wave ka, right? Full wave rectified, half wave rectified ka. Directly use हो जाता है ये, okay? Right? Directly use हो जाता है. Square, right, and sawtooth. If you just remember directly, it will be much easier for
right? You guys to solve exam, ठीक है? So ये याद रख लेना. So this is the basics, right? Now when you talk about measurement, so we know, right, for AC and DC, we have different kind of instruments. Yes or no? Tell me. I hope all of you remember this. For Yes, sir. AC, we have different kind of instruments, right? For DC, we have DC meter. For AC, we have AC meter. So I remember that normally theory पूछा था इससे, है ना? That which kind of instrument is used. So you just have to, I guess all of you already studied this, but you just have to remember the information in this table. Simple. Okay, right? ये table, है ना? Okay. NCERT में दिया हुआ है. This is given in NCERT. So this is right. You just have to, because generally we tends to forget. ये ऐसे questions आते हैं ना तो भूल जाते हैं कि DC meter, we know that DC meter, right, works on what? Magnetic effect of current, right? But AC meter works on heating effect of current, right? DC meter reads average value, AC meter reads RMS value. So these are things that we have to remember. Okay. Right? Okay. Now, okay. Okay, phase difference, everyone know. Yes or no? Phase difference, right? Phasor diagram, because we have been studying this. Yes, sir. है ना? Okay, guys, Sania, Mansi, Koshi, everyone. So if you need to remember, I guess all of you remember, right? You can just remember like this, civil, है ना? The main issue with remembering the, tell me, remembering the concept that which quantity lags or leads, right? This is something which always confuse people. Okay, so you can just remember this, right? Okay, what is the meaning of civil? Voltage voltage leads current in case of capacitor, and current leads voltage in case of inductor, right? That's it. Okay, now with differentiation, I guess all of you know how to calculate this, है ना? कि कैसे मेरा ज्यादा हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, right? Yes or no? Tell me. All of you know this? Okay, so I'll just focus on some basic problems, okay? Right? So if I'm having problem like this, right, बहुत basic, अगर question दिया रहा है तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, RMS value, peak value, frequency, initial phase current and all those things. Okay, right? है ना? तो ऐसे questions बन जाएंगे. Just go through it once. Just go through it once. Because after few, like, this is the basics, right? My main emphasis would be focusing on LCR circuit, right? ये जनरली जल्दी जल्दी करके हम LCR सर्किट पे फोकस करेंगे, ठीक है? राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना? हाँ या ना? जस्ट हाँ सर, हो जाएंगे. ओके, राइट. ऑब्वियसली अभिराम, आर्यन, तुम लोग से तो हो जाएंगे, मैं बाकी से पूछ रहा हूँ. राइट, विवेक, सौम्या, हिमा, जशरण, खुशी, कोशी, राइट, जस्ट रेज योर हैंड. है ना? ठीक है. So now the main concept, right, is LCR circuit. So instead of revising LR circuit, RC circuit, right, I'll just go through LCR circuit and how to solve problems. Now, as I told you, you should have the basic idea about, tell me, basic idea about current, है ना? So let us see. So when you talk about current, I is equal to V by R. This is something we know. I and R. Right, the same concept will be applied for AC also. Now the only thing that will change is R, right? R will change into, tell me, R will change into Z, right? And Z is called as, I guess all of you know, है ना? So when you talk about LCR circuit, okay, when we talk about LCR circuit, right, we don't have just resistance, we have resistance, capacitance and inductor, all the three, and the source is AC. Okay, so the formula will be same. The formula is not going to change, right? I will still be V by Z. Instead of R, we will have V by Z, but it will be magnitude. Okay, and then we will have what? Sine omega t plus or minus pi, right? So here we have two things. First is finding Z. So
whenever you see these kinds of problems, right, the basic or the simplest thing that you can do is find z first. We know what is z. Tell me, root of. Tell me, what is root of? I guess all of you remember r square plus. Tell me. XL minus XC whole square. C minus x, sorry, XL minus x whole square, right? Where XL is. Tell me. Omega Inductive L. reaction. हाँ, वैल्यू क्या होता है? ओमेगा L. हाँ सर, ओमेगा L. And XC दूसरा is वाला 1 by omega C. what? 1 by omega 1 C. by omega C. Sorry, 1 by omega L, and this is omega C, right? Okay. नहीं सर, उल्टा होगा ना, वो ओमेगा तो एल उल्टा होगा 1 by omega. उल्टा होगा. Right? नहीं सर, उल्टा. अभी फिर से उल्टा. सर हाँ एल सर. ओमेगा एल सर आएगा आपने और वही 1 वही by लिख दिया. omega c. सेम लिख दिया. Right? Just omega L 1 by omega C है ना? Starting में मैंने ये लिखा था ना? हाँ. Right? सिंपली हाँ, देखो ना, तुम इंटीग्रेट करते हो I is sorry V is equal to L divided by dt होता है ना? राइट? तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे, ये डिफरेंशिएट होगे तो L ऊपर आएगा ना? ओके, राइट. सो इसका वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो मुझे मॉड ऑफ z निकल जाएगा, यस और नो, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट दिस phi, है ना? सो for phi you just have to see the angle of this, right? So we know that tan phi is equal to what? xl minus xc by r. Okay, now as we have studied in trigonometry, you don't have to see the sign of either xl minus xc or c, right? तुम बस इसको क्या कर लो, वैल्यू निकाल लो. Then you have to just see in which quadrant it is, right? First quadrant, second quadrant, third quadrant or fourth quadrant, है ना? yes sir. Okay, now I guess ये अगर याद है ना तो सारे क्वेश्चंस AC के बन जाते हैं. Yes or no? Tell me. Like at least numericals वाले. Yes sir. हाँ, you just have to find these only. और कुछ करना ही नहीं है. Let us try to solve some problems on LCR circuit, right? So this table you have to remember. If you see this table, है ना? Right? ये एक table normal R L C we know, right? किसमें lag कर रहा है, किसमें lag lead कर रहा है, graph कैसा होगा and all those things. Okay, right? I was just basic problems तो हो जाएंगे. Just let me show you some good problems. Okay, right? Yes, so this is your RL circuit, RC circuit, LC circuit. जैसे भी हमने देखा है ना, टोटल LCR के लिए Z क्या हो जाएगा, राइट? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का, राइट? सॉरी, XL माइनस XC का होल स्क्वायर. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? VL VR. तो यहाँ पे V is leading, है ना, as compared to VR, और I is leading. Tell me, बताओ. सेम में रहेगा. V ना, V leads, right? VR, and VR and I will be in same phase. So V leads I, okay, in RL circuit. And when you talk about RC circuit, V lags I. That's why it is civil. Okay. Now, ये हो गया, LC circuit भी हो गया. So these information you can just directly use, right? Directly formula putting कितने सवाल आते हैं इसमें. ओके, ऐसे सवाल हो जाएंगे. ऐसे सवाल तो सारे हो गए होंगे ना? यस और नो? हाँ सर. राइट. नाउ LCR सर्किट का एक दो सवाल देखते हैं. This is what we just discussed, right? When you talk about E, root of V square plus VL minus VC whole square, same thing with, right? I into root of R square plus XC minus XC whole square. Okay. Yes. So this equation, when you talk about this equation, this was for what? Parallel parallel LCR circuit or series LCR circuit? Tell me. सीरीज. Series. What about parallel?
व्हाट अबाउट पैरेलल? पैरेलल एलसीआर में, पैरेलल आरसी सर्किट में क्या करेंगे? एलसीआर सर्किट में टेल मी व्हाट अबाउट पैरेलल? आर्यन, अभिराम, अवैस, ये तो सीरीज का हो गया, अगर पैरेलल है तो क्या करेंगे? टेल मी कोशी, if I'm having parallel LCR circuit, right, then what would be the equation? बताओ क्या हो जाएगा everyone? Then what would be the value of Z if the circuit is in parallel? Tell me. Anyone? विनूथा, रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है? टेल मी, रेसिस्टेंस के केस में खुद सोचो ना, रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है? Just give me a minute, something happened with this one. Okay. रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है एवरीवन? अगर मेरा 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में है, राइट, है ना, सपोज दिस इज R1, सिंपल कॉन्सेप्ट है, एवरीवन शुड रिमेंबर, राइट, ये पैरेलल में होता है, मेरा R इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 by R इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 by R रेसिप्रोकल्स का सम plus 1 by R3, yes or no? Right? So I'm asking that if I'm having this in parallel, right, है ना, क्या होगा इसका? सोचो, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है. So suppose this is R, right, this is XL, this is XC, क्या होगा? Don't you think that 1 by Z is equal to what? 1 by R plus, बताओ everyone, tell me. 1 by XL minus 1 by omega plus omega. Okay, because imaginary axis पे होता है ना ये. Yes or no? Can I say that? Tell me, can I say that? हाँ या ना? Everyone, can I say that? But obviously ऐसा लिखना is not convenient, right? ऐसा लिखना is not convenient, है ना? So what we do? Tell me what we do. We know that 1 by Z is called as, tell me, 1 by Z is called as conductance, right? है ना? अरे when you talk about this ना, तो हम लोग क्या करते हैं, right? This is real and this is imaginary ना, हाँ या ना, right? Okay, sorry. तुम लोग के सिलेबस में इमेजिनरी का यूज नहीं किया गया ना? नहीं सर, राइट, सर पैरेलल वाला नहीं पढ़ा. पैरेलल वाला नहीं पढ़े हो क्या? हाँ सर, नहीं. पैरेलल वाला नहीं पढ़ा. Okay. Right, so normally this is imaginary only, right? It is a complex number, ठीक है? When you talk about current and voltage ना, right, everything is complex number. This is a complex number, ठीक है? Right, समझ में आया? So this will be a complex number, right? So the R part will be a real part and this will be the imaginary part, right? That is why ना, जो तुम बात करते हो power की, right, real और, tell me, active and reactive, yes or no? Active reactive power. So reactive power is basically called as imaginary power, right? Active power is the power which is dissipated by resistance, ठीक है? Anyways, right, this is the imaginary part, right? You can just say that when you talk about this now, right, x and y, so this is your argand plane, ठीक है? Right, the phasor diagram में स्पेशली इसमें जो होता है हम उसको आर्गन प्लेन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? So 1 by Z can be written as, tell me, right, 1 by Z is, suppose G, है ना? I hope all of you remember G from electrochemistry, yes or no? है ना? Right, so it is what? It is, suppose GR plus this is GL minus GC. I'm just representing something, हाँ या ना? Right, got it? So mod of G कितना हो जाएगा? Mod of G कितना हो जाएगा? I guess all of you remember mod of G. हाँ सर, GR square plus GL minus GC whole square. Exactly, है ना? So हो गया ये, ठीक है?
Clear हो गया ये, right? Anyone have any issues? And now when you talk about v is equal to I by mod of z. So अब g के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? v is equal to ig mod of g, right? I'm just talking about the value. ठीक है, सबको समझ में आया? हाथ उठा लो, सबको समझ में आया? Right? Yes or no? Yes, sir. Sir. Okay, because हाँ ठीक है, right? So just let us see. Okay, right? So same thing है ना, series और parallel. तो parallel का जो मैंने बताया same चीज होगा. The only thing that will change is what, right? जो हम लोग normal current में पढ़ते हैं, instead of voltage current is divided, right? So current का division होगा. Current will lag and lead, है ना? Instead of voltage, current will lag and lead because voltage will be same, है ना? Right? So current will lag and lead, right? So we know this already, है ना? So I will be what? Instead of V, we will have I is equal to IR square plus IL minus IC. Admittance, right? This is admittance, Y, or you can say, right, 1 by R is G, right? So, sorry, my bad. In notation, I will just use the correct notation, right? Okay, so this is Y. 1 by Z is called as Y. 1 by R is G, okay? Right? और ये तुम GL by GC और SL, SC कुछ भी कर सकते हो, it doesn't matter, right? It is just a matter of notation. Okay, right? Different book uses different notation, but yeah, ठीक है, concept में आना चाहिए. This is clear? Tell me. अगर मान लो तुमको सीरीज में ना देकर पैरेलल में दे दिया तो निकल जाएगा ना? हाँ या ना? Right? और tan phi is what? Same. Tan phi is y component y, x component. Okay. So anyone have any doubt in this? Tell me. Parallel LCR circuit. बताओ. Same सीरीज से ही ज्वाइन कर लेना है, राइट? ज्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है? जो हम लोगों ने करंट में पढ़ा था वही काम करना है. द ओनली थिंग इज 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह क्या हो गया? इंपेडेंस हो गया है, राइट? रिएक्टेंस हो गया, सॉरी, रिएक्टेंस हो गया है ना? ओके, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, ठीक है? राइट, नाउ लेट अस see some problems. I guess all of you can solve these kind of problems and have already solved these kind of problems. एक बार देख लो, ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए थे ऑलरेडी. हाँ सर. Now, because when you solve these kind of problems, na, right, it is actually easy. You just have to find the magnitude, है ना? Normally तुम्हारे syllabus में angle नहीं पूछता है, ठीक है? Right? You don't have to worry about the phase difference, ठीक है? So it is fine. At least mains और need पे तो नहीं पूछेगा. Advance में you can ask, right? है ना? But in advance, if it is asking, then you can just use the concept of, tell me, right? You can just use the concept of waves, right? है ना? और obviously trigonometry will be used. हाँ सर, LCR में थोड़े क्वेश्चंस किए भी थे वैसे. हाँ, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे सिंपल, राइट? अगर पैरेलल में है कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या निकालना है? y निकाल लेना है, ठीक है? राइट, y निकल लेना, फिर z निकल जाएगा, राइट? सो ऐसे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे. एक बार सबको देख लो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में पूछेंगे, है ना? राइट, जब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है. फॉर्मूला याद रखने आप. ओके, नाउ एक बार जल्दी से देखो, ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना. इंपेडेंस यहाँ पे दोनों पैरेलल में हो गया, तो इसका इंपेडेंस क्या हो जाएगा? व्हाट इज द इंपेडेंस ऑफ दिस? एवरीवन, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, जस्ट टेल मी द फॉर्मूला. ये क्या हो जाएगा? इसका इंपेडेंस क्या होगा? 1 by z is nothing but, tell me, 1 by xl minus 1 by xc, है ना? बिकॉज l और c है सिर्फ, राइट? यहाँ पे क्या होगा? दोनों सीरीज में है ना? तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर का अंडर रूट, और ये तीनों तो पता ही है. ओके, राइट? ओके, सो दिस इज एज आई सेड, है ना? सो दिस इज पार्ट 2. पार्ट 1 क्या था? बेसिक तुमको इक्वेशन दिया रहेगा, तुमको आरएमएस, राइट, एवरेज, फेज एंड ऑल दोस थिंग्स पूछेगा, राइट? कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है. द सेकंड इज योर एलसीआर सर्किट एंड सब पार्ट ऑफ एलसीआर सर्किट. सब पार्ट मींस एलआर सर्किट दे दिया गया, राइट? है ना?
RC सर्किट दे दिया गया, राइट? यस यस, वाई को एडमिटेंस बोलते हैं. ओके, राइट? नाउ नेक्स्ट इज रेजोनेंस. So I guess we have already studied resonance in waves, sound. Resonance का मतलब क्या होता है? It is basically the frequency, right? है ना? जहाँ पे बताओ, what is the meaning of resonance? Tell me. Right? Meaning of resonance is basically a frequency, right? It's an instant where the natural frequency of any circuit or anything, है ना? Right? Is equal to frequency of applied voltage in this case, right? In case of, tell me, in AC circuit, but when you talk about sound, है ना, याद है जब हम बात करे थे, same चीज, when the frequency, right, of, tell me, frequency of any, or natural frequency of, tell me, natural frequency of any wave, है ना, is equal to what? Frequency of either tuning fork जो generate कर रहा है, yes or no, right? तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, frequency को equate करते हैं, yes or no, tell me, right? Or I can say, right, where the energy will be maximum, kind of, hyena, right? So when you talk about this, since we have two type of circuits, we have two type of resonance, series resonance and parallel resonance. I guess all of you have studied series resonance. Series resonance सबने पढ़ा है, hyena, tell me. Yes, sir. So I am saying that, sir, in this case, right, Z is minimum. Z is minimum. So Z minimum होने के लिए क्या होना चाहिए? Z minimum होने के लिए क्या होना चाहिए? I guess all of you remember XL minus XC should be equal to 0. तो यहीं से मुझे ओमेगा का वैल्यू आ जाता है ना, राइट? तो ये इजी है ना? दिस इज इजी ना. यहाँ पे तुमको ये ध्यान दो, यहाँ पे तुमको ये पूछा जाता है, ये कभी कभी F1 F2 दे देगा, राइट? F1 F2 देगा. यू जस्ट रिमेंबर दीज ग्राफ, एवरीवन, स्पेशली फॉर JEE एडवांस एंड नीट, सॉरी, JEE एडवांस एंड JEE मेंस, ये याद रखो. दिस इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ. दिस इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ, राइट? है ना, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ इसको बोलेंगे जनरली, ठीक है, राइट? तुमको ये पूछेगा कि ये और ये यहाँ के बीच में ना एनर्जी क्या होगी, हाफ हो जाएगी. क्या रहेगी? हाफ. एनर्जी विल बी हाफ. ओके, द एनर्जी एट दीस 2 points will be half, right? Okay, and this is called as bandwidth, right? So कभी कभी क्या होगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ना देकर F1 F2 दे देगा, right? या तुमको बैंडविड्थ दे देगा और तुमसे पूछेगा कि at which frequencies that will be half, है ना? So I can say delta F is equal to what? F2 minus F1, right? है ना? Okay, so this is just a term that you should remember, बस और कुछ नहीं. Okay, right? Got it? Yes or no? Yes, sir. Okay, right. So next is quality factor. I guess all of you know what is quality factor. What is the quality factor? बताओ. What is quality factor? There are two things, quality factor and form factor. The sharpness of lens graph. Right. So what's the formula? So 1 by R root L by C. Right. So it's basically 1 by, so there are multiple formulas, right? Okay. So first is basically omega L by R, है ना, right? Omega L by R, or if you just put the values 1 by R root L by C, or it is resonance frequency by delta F. ठीक है, right? So कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे तुमको information अलग अलग देता है. Instead of giving this, you might be given this, ठीक है, and you have to find the value of Q. So you have to remember all these formulas. Normally क्या होता है कि ये वाला formula याद नहीं रहता है. Okay, ठीक है? So just try to remember this form of Q, right? Which is resonance frequency by bandwidth. ठीक है? Yes or no? Got this? You can just Yes, sir. note it down. ये generally आता है, generally याद नहीं रहता है. Okay. Now, there are few terms. Just give me a minute. Right. So अगर quality factor ज़्यादा होगा, right? तो sharpness ज़्यादा होगा, yes or no? है ना? As I guess Jashan said, right? Quality factor ज़्यादा होगा तो sharpness ज़्यादा होगा. Make sense? है ना? So this is the thing. So यहाँ पे देखो, if you equate this curve with the equation, है ना, right? ठीक है. So we know that at resonance,
है ना, at resonance VL or VC will be what, QE, right, where Q is the quality factor and E is the energy supplied, है ना, right? So this Q is also called as magnification factor or Q factor. So sometimes, right, instead of saying Q factor, you will be given as magnification factor. Both are almost same, ठीक है? Both are almost same, ठीक है? Right? Okay. Now, when you talk about parallel resonance, what do you think? What will happen in parallel resonance? Tell me. What will happen in parallel resonance? बताओ. जैसे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सेम यहाँ पे, राइट, पैरेलल में इस केस में, है ना, उल्टा होता है, राइट, यहाँ में क्या होगा, उल्टा होगा. हम जब सीरीज की बात करें, सीरीज में मुझे z क्या चाहिए था, z क्या चाहिए था, मिनिमम, राइट, यहाँ पे z क्या चाहिए, टेल मी, मैक्सिमम, बिकॉज वी नो द पैरेलल में क्या होता है, कम हो जाता है ना, राइट. सो आई नीड टू एलिमिनेट, राइट, द, टेल मी, XL and XC component, है ना. Okay, so if you talk about this, resonance frequency will be what, same, हाँ है ना, resonance frequency will be same, yes or no, हाँ है ना, yes or no. यहाँ पे same होगा तो अलग अलग होगा, everyone tell me what would be the resonance frequency, what is the value of Z, guys, can you hear me, can you see this? इसके लिए right, इसके लिए what is the value of, tell me what is the value of Z इस सर्किट के लिए, tell me what's the value of Z for this circuit? बताओ. यहाँ पे this and this are in series and L is in parallel, हाँ है ना. SC again, SC जो है ना, that is your 1 by XC, SC is 1 by XC, ठीक है, right, SC is 1 by XC. ठीक है, right. Now if you think about it, right, यहाँ पे for this circuit 1 by Y, sorry, 1 by Z is equal to what, 1 by R plus XLI plus 1 by XCI, right? I'm using the notation, okay? I'm using the complex notation, right? Sorry, minus. Screen is okay. Sorry, guys. Right. So here I was using the notation, है ना? So अगर तुम देखो ये दोनों क्या है, series में है ना? So can I say, sir, for this circuit Z is equal to what? R plus, tell me, R plus XLI, because when you talk about XL is in Y component, XL is Y component, imaginary component, yes or no? Right? And this is in parallel, minus XC, I cap. Okay, so बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 by Z is equal to what, 1 by this R plus XLI, है ना, minus 1 by XCI. मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर डेरिवेशन कैसे हुआ है ना, ऐसे तुमको पूरा जानने की जरूरत नहीं है, बट if you know that this is a complex number, you can okay, ठीक है,
राइट? इमेजिनरी वन नहीं है क्या? एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस नॉर्मल नॉर्मल 12th के सिलेबस में है नहीं, बट ये चीजों को इजी बनाते हैं कैलकुलेशन के लिए, राइट? यू कैन जस्ट ओमिट इट, राइट? यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है? फॉरगेट अबाउट दिस, वी विल डिस्कस इन एडवांस क्लास, राइट? जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट? जो ये फॉर्मूलाज है ना, राइट? अगर कभी आ गया तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? ओके ओके सर। राइट? एवरीवन, अगर आ गया ना कभी पैरेलल वाला, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, सो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में सेम फॉर्मूला नहीं लगा देना है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? ओके right? You can just write it down, just write it down. If you want to write, just write it down. I was just showing you how to derive this, but fine, leave it for that. Okay, so when you talk about resonance, है ना, series resonance किसको amplify करता है? Series resonance voltage को amplify करता है कि current को amplify करता है? Tell me. In series resonance, right, voltage is amplified or current is amplified? Tell me. V is equal to, tell me, in series what is amplified? Voltage or current? किसी को आइडिया है? मतलब सोच सकते हो कैसे? बताओ अभिराम। इन सीरीज अगर सवाल पूछा गया एसोसिएशन में, राइट, इन सीरीज रेजोनेंस, राइट, इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ओके, voltage amplified or current is amplified? Tell me. सर करंट एम्पलीफाई होगा ना? Current. So यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस में, राइट, सीरीज रेजोनेंस गिव्स वोल्टेज एम्पलीफिकेशन एंड पैरेलल रेजोनेंस गिव्स करंट एम्पलीफिकेशन, ठीक है? राइट? एम्पलीफिकेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट एम्पलीफिकेशन, यहाँ पे आई मिनिमम, राइट, दिस इज मिनिमम करंट निकल रहा है, बट एम्पलीफिकेशन जो देगा ना वो उल्टा होगा, राइट? ओके, right, series resonance gives voltage amplification while parallel resonance gives current amplification. So ये सब पॉइंट्स जो है ना वो तुमको एसोसिएशन रीजन में पूछ सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है? So if you want to note some points, you can just note it down. Okay. Now अब जैसे यहाँ पे सवाल है, for what frequency the voltage across resistance will be maximum? ठीक है, अब बताओ, तुम क्वेश्चन समझ में आया? ये लाइन जो है ना, ये क्वेश्चन समझ में आएगा? बताओ everyone, try to solve this. Guys, सर 1/2 पाई रूट LC। 1/2, yes, है ना? बिकॉज यहाँ पे, सॉरी सॉरी सर्किट नहीं दिया ना मैंने, सॉरी सर्किट नहीं दिया, राइट? सर्किट दिस वन, है ना? सो बेसिकली सीरीज में है, सो वी जस्ट कैलकुलेट, हाँ है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सिंपल। ओके, लेट मी शो यू वन गुड प्रॉब्लम्स। ये सब सवाल हो जाएंगे, अगर ऐसे सवाल दिए रहे हैं तो हो जाएंगे ना एवरीवन? अगर सवाल ऐसे रहे, कैन यू सी द प्रॉब्लम? कैन यू सी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है ये, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है, बस एक बार देख लो। सॉल्यूशन देख के काफी सिंपल लगेगा, बट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ओके, सॉल्यूशन देख के तो काफी सिंपल लगेगा।
Okay, right? So I guess all of you can solve this, है ना? यहाँ पे omega, sorry, VL दे दिया, VC दे दिया, right? और VR पूछ दिया है ना? है ना? Right? Okay. Now, what is ours? Tell me. You have to find the value of X and I. ठीक है? And here the voltage between, right? Tell me. Inductor and capacitor same दे दिया यहाँ पे. तो अगर दे दिया है, right? What is the meaning of this? It means Resonance. I into, है ना? Exactly. तुमको बोला नहीं है, but यहाँ पे दे दिया है ना? So I into XL is equal to what? I into XC. राइट तो डायरेक्टली रेजोनेंस बोल दिया है ना? तो निकल जाएगा आई गेस, है ना? राइट ओके, ये भी हो जाएगा. यू कैन आल्सो सॉल्व. राइट, ट्राई टू सी दिस फ्रॉम लास्ट प्रॉब्लम एवरीवन. दिस वन सेम कॉन्सेप्ट, है ना? हो जाएगा. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. Yes, sir. ओके, now power. Next concept is power. So when you talk about power, तुम लोग कितनी टाइप के पावर जानते हो guys in AC circuit, right? How many types of power you have studied? बताओ. Aryan, Awais, Abhiram, Koshi, Samya, how many types of power you have studied? Because generally लोगों को इसमें generally right doubt होता है. How many types of power you have studied? Nidhi, Nishita, Pravesh, Pranjal, Priyanka, everyone. Anyone can tell me how many types of power you have studied? What's the formula of power? VRMS, IRMS into cos phi. And what is that power? Average. Average power. Average power, right? VRMS, IRMS into cos phi जो बोल रहे हो, that is your average power, right? That is what you're saying ना, है ना? So if I Yes, sir. ask what's the formula of like total power का formula क्या होना चाहिए? Just V into I, simple, just V into I ना, that is what we have studied, right? है ना? Yes, sir. Just V into I. Yes, And sir. what's the formula of V? V is equal to V naught sin omega t, मान लो, right? And I is I naught. Tell me, I naught, अगर तुम simple, right, simple circuit की बात करो तो I क्या होगा? I naught sin omega t plus minus phi, yes or no, right? Yes, Phi sir. is because of this Z. Okay, now I will show you this, right? I guess all of you have, like, I don't know if you have derived this or not. Have you derived this, like multiply हाँ करके, sir. है ना? So if हाँ you, sir. right, so if you have derived this, you can say we have two components, right? दो component मिले होंगे, है ना? Tell me. यहाँ पे क्या किया गया है कि तुमको एवरेज डायरेक्टली ले लिया गया है, डायरेक्टली एवरेज ले लिया गया है. सो एवरेज डायरेक्टली यू गॉट दिस, ठीक है? बट इफ यू हैव डिराइव्ड, यू हैव gotten two components, एक दिस, एक ये, और एक और साइन वाला component, हाँ या ना? टेल मी. V naught I naught sin omega t, right, minus this. Okay, so when you talk about average, you got this component. Okay, सर हम एवरेज वाला ही किए थे डिराइव. हाँ तो वो तो इसको इंटीग्रेट sir. करके इंस्टैंटेनियस को, हाँ. इंस्टैंटेनियस sir. दो पार्ट में आएगा, है ना? राइट, अगर कॉम्प्लेक्स टर्म लिखते तो साफ साफ स्प्लिट हो जाता, बट एनीवेज, राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट द पावर, टोटल पावर, राइट, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, राइट, है ना? राइट, इट इज P real plus, and I'll just give you this, P real plus P imaginary I cap. Okay, now P real is your, जो P real होता है ना, that is your kind of average power, जो तुम average power देखते हो, that is your P real. और P imaginary, तुम लोगों ने कहीं reactive power सुना है? reactive power सुना होगा? नहीं? हाँ बताओ. I don't know if you have heard this or not. reactive power? No? Okay, apparent power? Apparent power सुना है sir. Okay, so
in AC we have एपरेंट three पावर तो आरएमएस पावर ही होता है ना. सर वो वर्चुअल पावर और आरएमएस पावर ही होता है. हाँ, जो वर्चुअल पावर है ना वो रिएक्टिव पावर. सो when you talk about power we have three type of power, right? One is active, okay, active जो हम एवरेज जानते हैं. सेकंड इज apparent, थर्ड इज रिएक्टिव और इमेजिनरी जो तुम इमेजिनरी बोल सकते हो या वर्चुअल बोल सकते हो. ठीक है, राइट? सो यहाँ पे तुमको बस वर्चुअल पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस दे दिया है. ठीक है, राइट? बट दिस इज नॉट वर्चुअल पावर. ठीक है, इसको वर्चुअल नहीं बोल सकते, लाइक इट इज जस्ट अ टर्म यूज, राइट? है ना? इसको जनरली एपरेंट बोलो, दिस इज एपरेंट पावर. ओके, राइट? यूजुअली इसको एपरेंट पावर बोलो. ओके, नाउ एवरेज पावर और जो एक्चुअल पावर बोला है, दिस इज योर एक्चुअली एक्टिव पावर. दिस इज योर एक्टिव पावर. ओके, राइट? और डिसिपेटेड पावर. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट, थिंक अबाउट इट, when you talk about current, right? अगर तुम खुद सोचो current जो है, right? When current flows through a circuit, right? It passes through conductor, inductor and resistor. Yes or no? हाँ या ना? Right? ये Yes, sir. assertion में पूछ सकता है ऐसा. Now we know that out of this resistance, right? Resistance is called as active component of the circuit. हाँ या ना? Because energy सिर्फ और सिर्फ resistance में dissipate होती है. Yes or no? एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में डिसिपेट होती है. ये वी नो दिस और नॉट कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि कभी कभी ना ये असर्शन में टेस्ट सीरीज में आ चुका है, राइट? whenever we talk about dissipation of energy, right? Whenever we talk about dissipation of energy, right, it only occurs in resistance. It does not occur in conductance and conductor and inductor. Yes or no? Right? तो इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर इंडक्टर में एनर्जी डिसिपेट होती ही नहीं है. Tell me, energy dissipate होती नहीं है ना? Yes or no? That is the thing, right? नहीं dissipate होती energy, है ना? Right? Energy dissipate नहीं होती है. Then so हम resistance को use कर, resistance को छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ conductors और inductors use करते हैं, right? Then energy तो dissipate होनी ही नहीं चाहिए, power तो use होना ही नहीं चाहिए, है ना? Yes or no? Right? Because when we talk about power, we generally talk about real power. ठीक है, right? There's an imaginary component also जो हम लोग को नहीं दिखता है. Because see, you might have studied this cos phi as what? Tell me, cos phi को क्या बोलते हैं? Power factor? आर फैक्टर. हाँ सर. Right? R factor, power factor. इसका physical significance पता है? Like physically इसका मतलब क्या होता है? Like apart from this equation and term, physically इसका मतलब क्या होता है? हाँ सर, पढ़ा Yes. था वो एवरेज पावर बाय एपरेंट पावर. ओके, उसका मतलब क्या होता है? अच्छा एक चीज बताओ, जब मान लो राइट, यू नो दैट एनर्जी और पावर इज जनरेटेड इन पावर प्लांट्स, राइट? है ना? ओके, सपोज दे जनरेट लाइक 100 जूल ऑफ एनर्जी, 100 जूल ऑफ एनर्जी, राइट? सो क्या 100 में से 100 जूल ऑफ एनर्जी यूजेबल होता है? नहीं सर, नहीं ना, नहीं यूज होता है, एफिशिएंसी राइट? नहीं हो सकता 100%. नहीं, जो रिलीज हुआ है, राइट? नॉट ऑन टॉक अबाउट एफिशिएंसी, जो रिलीज हुआ, जो जनरेट हुआ है. ओके, नथिंग इज ना, इसमें से 100 जूल एनर्जी यूजेबल नहीं होता है. ओके, सो दिस factor, right, is basically the ratio or the percentage of usable energy. For example, अगर form factor 0.8 है ना, right? Form factor 0.8 है, right? इसका मतलब क्या है? Power factor 0.8 means 100 जूल में से 80 जूल ही यूजेबल है, 20 जूल यूजेबल नहीं है. समझ में आया? सर इसका मतलब ये हो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी जो यूजेबल है वो वैसे वैसे कंसीडर करना है. एग्जैक्टली. तो व्हाट इज दिस 20 जूल? ये 20 जूल जो है वो कहाँ जाएगा? लाइक ऑब्वियसली इट शुड बी इन पावर. ये कहाँ जाएगा? दिस इज योर रिएक्टिव पावर, है ना? और इमेजिनरी वन, बिकॉज टोटल तो इतना ही होना चाहिए ना, दैट ही हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज हाँ. स्टोर्ड इन इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है ना? ओके, so this I hope all of you understood, right? When you talk about power, VRMS, IRMS, cos phi, ठीक है, right? VRMS, RMS, cos phi is your dissipatory power, average power, active power, actual power जो बोल लो,
right? ये सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस से एसोसिएटेड है, दिस इज एसोसिएटेड विद रेसिस्टेंस, समझ में आया, राइट? दिस इज apparent power and peak power is P naught into I naught, right? ठीक है, नाउ रिएक्टिव पावर तुम्हारे शायद यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, राइट? सो आई गेस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स, हाँ है ना, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स, राइट? एवरेज पावर क्या होता है? पावर फैक्टर इज एवरेज बाय आरएमएस, right, which is R by Z, है ना? So R by Z, if you see this, R is what? Just resistance component, and Z is total, है ना? So this is just the ratio of total amount of power that can be, right, used, right? ठीक है? Okay? So you can just go through this table. I guess ये सबको पता है, ये table, हाँ है ना? ओके, हाँ, so I सर। guess ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना एसी में? एलसी ऑसिलेशंस था। ऑस्किलेशंस तो वो तो इजी, वेट, एलसी ऑस्किलेशंस तो करंट में ही हो गया था ना, राइट? choke all, because when you talk about choke coil, you know, right? How many of you know choke So coil? transformers भी. हाँ, transformers and all, ट्रांसफॉर्मर्स में। transformers and all, right? हाँ, ये भी है, तो ट्रांसफॉर्मर्स हमने ईएमआई में किया था। because now how many of you know about choke coil? Tell me, what is choke coil? Anyone? choke coil पता है क्या होता है? ट्यूबलाइट में कहीं छोटा सा वो देखा है? I don't know if you have seen this or not. When you talk about ट्यूबलाइट, right? घर पे पुराना ट्यूबलाइट देखा होगा, तो एक इतना छोटा सा कुछ लगा रहता था। हाँ सर, वो वोल्टेज Starter. रिड्यूस करता है, वो एक साथ हाई वोल्टेज आने नहीं देता। ओके, ठीक है, तो बेसिकली कभी चोक कॉइल खोल के देखोगे ना, तो इट इज नथिंग बट इंडक्टर ओनली, इट इज नथिंग बट इंडक्टर ओनली, समझ में आया? ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस चोक कॉइल, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस चोक कॉइल? इसका काम क्या होगा? सर, इट विल रिड्यूस द वोल्टेज सप्लाई टू ट्यूब। हाँ, ठीक है, वोल्टेज की करंट, वोल्टेज होगा ना? वोल्टेज की करंट बताओ। सर करंट। this is LR circuit, right? When you talk about this, now this is LR circuit, है ना? Now when you talk about LR circuit, ठीक है, क्या रिड्यूस होगा? करंट की, because this is a series circuit, है ना, ये सीरीज है ना, राइट? ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? करंट रिड्यूस होता है, okay? Now if you see the equation, right, z क्या हो जाएगा? z is equal to this, यहाँ पे छोटा सा r जो होगा वो छोटा सा रेजिस्टेंस हो गया, राइट? ओमेगा इंडक्टेंस, ओके, राइट? सो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? z की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। राइट, सिंपल, तो i करंट हो जाएगा, करंट कम होगा ना, ओके, हाँ सर। हाँ सर। राइट? सो ये जो पावर लॉस होगा, इसमें पावर लॉस जो होगा, राइट, दैट वुड बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ओके? सो ये थ्योरी में पूछा जा सकता है, सब थ्योरी में, ठीक है, राइट? बिकॉज आजकल कुछ भी पूछ रहा है, सो ऐसे पॉइंट्स को याद रख लो या लिख लो कहीं भी, ठीक है, राइट? ओके, सो ना ट्रांसफॉर्मर्स तुम लोगों ने इसमें किया है कि ईएमआई में किया है? ईएमआई में कर लिए। ईएमआई में हाँ कर सर, लिया ना? ईएमआई में किया था। हाँ सर। ओके, सो एलसी ऑस्किलेशंस जो है, व्हेन यू टॉक अबाउट एलसी ऑस्किलेशंस, ओके, सो एलसी ऑस्किलेशंस इज ऑलमोस्ट सिमिलर ना, एलसी ऑस्किलेशंस जो है वो क्या है? एसएचएम है। एलसी
So we just have to find the value of what? Omega. हाँ है ना? हाँ सर। जैसे आरसी सर्किट में किया था हम लोगों ने, आरसी सर्किट में क्या किया था? इक्वेशन लिखा था, राइट, है ना? डीके और ग्रोथ ऑफ करंट निकाला था। यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन क्या करूंगा? वैसे मैं इक्वेशन लिखूंगा वोल्टेज का, है ना? राइट, यस और नो? यस सर। और वेव इक्वेशन जैसा था, थिंक अबाउट इट, जैसा मेरा वेव इक्वेशन था वैसा इक्वेशन आ जाएगा, राइट? Okay, so you just have to like remember that whenever you talk about LC oscillation, right? KVL से इक्वेशन लिख दिया हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दिया, है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दिया एंड कंपेयर कर दिया. When you compare, omega is equal to what? 1 by root LC. Okay, that is your frequency of oscillation. So this is similar to resonance frequency, right? बाकी तो oscillation बस ज्यादा oscillation में कुछ फॉर्मूलेज रखो, दैट्स इट. मेन है इसके बाद इसमें दिक्कत क्या है ना, डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो तुमको वेव वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. डैम्प्ड ऑसिलेशन, व्हेन टॉक अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा? तो दिस इज नॉर्मल ऑसिलेशन, नॉर्मल वेव जैसा. डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा बताओ एवरीवन? सर फ्रीक्वेंसी नहीं सर, एम्पलीट्यूड जाते जाते इंक्रीज होता है, कम हो जाएगा. तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए क्या हो जाए? एनर्जी डिसिपेट होना चाहिए ना, डोंट यू थिंक? यस और नो? हाँ सर, इसमें कांस्टेंट रहता है टोटल, इसमें डिसिपेट होगा. हाँ, तो डिसिपेट होगा तो सर्किट में क्या चेंजेस होने चाहिए? यस और नो? राइट, सर्किट में रेजिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर. हाँ सर. Okay, now when you talk about circuit, it would look like something like this. ऐसा हो जाएगा, हाँ सर. है ना? Now अगर तुम ध्यान दो, अगर मान लो इस दो पॉइंट के बीच में ध्यान दो, इस दो पॉइंट के बीच में ध्यान दो, तो ऐसा सर्किट कहीं देखा है हमने? सर अभी अभी वो देखे थे. है ना? So it is just like parallel resonance जैसा, हाँ या ना? Yes or no? Parallel resonance में भी ऐसा हाँ सर्किट सर, देखा था ना? पैरेलल रेजोनेंस. हाँ सर. Right, exactly. तो उस केस में because we have seen when you talk about damped oscillation में जो frequency होती है that is same as resonance frequency. Sorry, normal oscillations में, LC oscillations में. So damped oscillation में जो frequency होनी चाहिए, जो frequency होनी चाहिए, that should be your resonance frequency इस circuit में, हाँ या ना? Right? And what is the formula? Tell me. याद है किसी को? अभी हम लोग देखा था, याद है? नहीं, ऐसा कुछ याद है? 1 by LC minus R square by 4L हाँ सर, square. F equal to 1 by 2 pi square root 1 by LC minus R square by L square. राइट, है ना? ओके, सर 1 by 2 pi भी आएगा ना बाहर? ओमेगा है ना ये? अच्छा हाँ वो हाँ, तो सॉरी सर. फ्रीक्वेंसी हाँ है. हाँ, ओमेगा ओमेगा. सो एफ आ जाए तो 1/2 पाएगा, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट. हाँ राइट, हाँ. क्योंकि तुमको Yes. थ्योरी पूछा जाएगा, तुमको बस थ्योरी पूछा जाएगा, ठीक है? तो अगर मान लो तुमको कुछ आइडिया ही नहीं है तो तुम छोड़ के आ जाओगे, है ना? तो अगर यहाँ पे तुमसे पूछा गया, राइट, कि ऑस्किलेशंस जो है, सवाल कैसा आएगा? सो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, इफ यू नो द फॉर्मूला, राइट, so as the time progresses, right, due to this resistance, right, है ना, the frequency will decrease, that's why it is your damped frequency, damped oscillation, है ना? So frequency of oscillation is given like this. So depending on this value, अगर ये value greater than 0 हो गया तो oscillation क्या होगा? Real. अगर less than 0 हो गया तो imaginary, तो वो तो होगा ही नहीं फिर है कि नहीं? So तुमसे पूछ दिया जाएगा what would be the value of 1 by LC for oscillations. ठीक है, मान लो पूछ दिया गया ऐसा. ओके, अगर सवाल तुमको बिना ये बताए ये सर्किट दे दिया गया है, राइट, आर का वैल्यू दे दिया गया, एल का वैल्यू दे दिया गया, सी का वैल्यू दे दिया गया, एंड यू वर टोल्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर द ऑसिलेशन टू बी रियल, राइट, है ना? तो अगर तुमको ये नहीं याद है, तुमको समझ में ही नहीं पूछ क्या रहा है, हाँ या ना? राइट,
बट आई गेस अगर ये फॉर्मूला याद है तो समझ में आ रहा है कि क्या करना है. You just have to make sure that this is greater than 0. सब कुछ दिया तो c का वैल्यू निकल जाएगा ना, ये कोई भी एक पैरामीटर वैल्यू निकल जाएगा. टेल मी, सबको समझ में आया ये? हाँ सर. यस सर. श्रेया, इंबा, सानिया, रौनक, प्रियंका. देखो कुछ कुछ चीजें जो हैं जो नहीं लगी उसको बस लिख लो, ये फॉर्मूला बस लिख लो, ठीक है. दिस फॉर्मूला इज फॉर व्हाट, पैरेलल रेजोनेंस के लिए भी और डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए भी. राइट, ओके, देन आई गेस इससे ज्यादा कुछ नहीं है. दैट इज इट, राइट? यही है ना सिर्फ. हाँ सर. Okay, so when you see the module, right? सर बस टीपीपी डिस्कशन बाकी था. हाँ, क्या क्या बचा? टीपीपी बचा हुआ है ना? हाँ बस उसका डाउट्स है तो, राइट, लाइक कहाँ से बोले तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन. तो 1.1 हो गया, सब कुछ पता है. ओके, just give me a minute. ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है ना ऑलरेडी? हाँ सर हो गए. ओके, थ्योरी है ट्रांसफॉर्मर वाला. ओके, हाँ. सो टीपीपी, सो इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 30. बस. हाँ. ओके, सो आई गेस ये सब 1 to 5 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. 1 to 5 काफी इजी है. एनीवन हैव एनी डाउट? टेल मी. रिया, मानसी, 1 to 5. Koshi, Pradyuman? नो, ओके, सब हो गया. वेरी गुड आर्यन. तो तुम लोग प्रीवियस ईयर कर लो, जिसका हो गया सब प्रीवियस ईयर कर लो. हाँ ठीक है, सर हो गया. वो भी हो गया ना? सर वो Okay. एडवांस असाइनमेंट भेज दो सर, एक बार रीसेंड कर दो. ओके, सो किसी को डाउट नहीं है? 30 तक में किसी को डाउट नहीं है? साम्या, सानिया, because I think these all are very easy problems, very easy. अभी जो हम लोगों ने अरे एग्जाम्पल, इसमें थियरी है टीपीपी में हाँ, थोड़ा. एग्जाम्पल्स जो देखा ना, तो एग्जाम्पल्स से भी इजी सवाल है इसमें. Power generated in inductor connected to AC source is, right? 0. Obviously. ओके, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? कैलकुलेशन इश्यूज है तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा. ओके, राइट? ओके, सो कोई डाउट नहीं है? एसी खत्म हो गया? एनीवन गाइस? राइट, ओके, चलो, राइट.